बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एंड वी डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रम, दैट इज आप जब व्हाइट लाइट को पास करते हो थ्रू ए प्रिज्म, वी नो दैट दिस व्हाइट लाइट or visible light that is splitting into its component color. When this light passing through prism, this white light is splitting into its component color, red, yellow, blue, green, orange and so on. So that is called spectrum. Means visible light का और white light का split होना into its components. So we define as the dispersion of visible light into its components when passing through prism. Here we discuss about two types of spectrum. Now we discuss the types of spectrum. There are two types now. One of them is called continuous spectrum, and the second is called line spectrum. With different types of spectrum, we discuss only two. In this continuous spectrum, the boundary between the colors cannot be marked. मतलब जो आपके कलर इमिट होते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म और एनी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, जो आपकी बाउंड्री लाइंस होंगी कलर्स की, दे कैन नॉट बी मार्क, दे आर मर्जिंग इनटू ईच अदर। आप इनकी बाउंड्रीज को सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकोगे। सो वी से द बाउंड्री लाइंस बिटवीन द कलर्स cannot be marked means आपकी जो बाउंड्री लाइन कलर के आपस में मर्ज हैं, आप इनको सेपरेट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दे आर मर्जिंग इनटू ईच अदर। द एग्जांपल इज रेनबो। हियर द बाउंड्री लाइंस बिटवीन द कलर्स आर सेपरेटली separated and isolated means आप इनके कलर को इजीली मार्क कर सकते हो। मीन वन आपका कलर एंड होगा, देन बाउंड्री, देन गैप इज देयर, देन सेकंड कलर, देन थर्ड कलर, देन फोर्थ कलर. You can be marked very easily between the colors. Here the boundary lines cannot be marked. Here boundary line can be separated and marked and can be identified very easily. Now we discuss about the main topic, hydrogen spectrum. In order to study hydrogen spectrum, when we take H2 gas and fill in a container and heat, it emits radiation. It is because of excitation and de-excitation of electron in each atom. So we say, when H2 gas is enclosed in a container and heated, it emits radiation. It is due to excitation and de-excitation of electron. After absorbing energy, electrons jump होते हैं low energy orbit से high energy orbit में, and when they come back, they emit radiations. And that was studied on the basis of wave number, that is wave number equal to 1.09678 10 power 7, 1 over n1 square minus 1 over n2 square. Here n1 represents the low orbit and n2 represent the high orbit. That units are in per meter. तो बच्चे बोहर ने वेव नंबर फाइंड किया from this formula for hydrogen spectrum. From this formula, Bohr is able to calculate wave number of hydrogen spectrum and the transition of electron, and the transition mean electron का जंप करना और वापस आना, transition of electron in hydrogen atom. The wave number can be calculated from the values of
ऑर्बिट्स n1 and n2, आप n1 और n2 को चेंज करके वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली। दैट इज, अब अच्छा हमारे पास स्पेक्ट्रम में डिफरेंट हमने सीरीज को स्टडी करना है, एंड दीज आर नंबर वन दैट इज योर लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, then we discuss about Paschen series, then bracket series, and the last one is Puffin series that explain the Huygens spectrum. In Lyman series, electron will jump from any high orbit to first orbit. It explains the ultraviolet radiations emitted from hydrogen atom, that is here n1 equals to 1, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हाई ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, एंड n2 इक्वल टू 1 से बड़ी सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन बच्चे जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट एमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस when jump from third orbit directly into first orbit, fourth orbit directly into first orbit, or from infinity into first orbit, it always emits ultraviolet or UV radiation. In Balmer series, it explains the visible light in hydrogen spectrum. Here n1 equals to 2, here n1 equals to 3, here n1 equals to 4, and for Puffin series n1 equals to 5। बच्चे आपको इनका n1 बड़े अच्छे वे में याद करना होगा। लामान सीरीज के लिए n1 1, इलेक्ट्रॉन जंप करे हाई ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे जंप करता है हाई ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड से 2, फोर्थ से 2, 5 से 2 एंड इंफिनिटी टू 2, it always emits visible light. When electron jump from high orbit to third orbit means n2 equal to 4, 5, 6, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फोर्थ शेल से थर्ड शेल में, 5 शेल से थर्ड शेल में, हाई शेल से थर्ड शेल में, they emits infrared radiations. That was studied by Paschen series. In bracket series n1 equal to 4, electron jumping from fifth orbit to fourth orbit, sixth orbit to fourth orbit, any high orbit into fourth orbit, it also emit IR radiation, means infrared. Similarly, when electron jump from high orbit means n2 equal to 6 or 7 or infinity into fifth orbit, they emits IR radiation. तो ये बच्चे हमारे पास डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं रिगार्डिंग हार्जन स्पेक्ट्रम, तो आपको बहुत ध्यान रखना है बिकॉज फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस n1 is very important. For Lyman series, for Balmer series, Paschen series, bracket series and Puffin series, you have to learn n1 only. तो आपके n2 n1 से all big values, these are your n2. Now we discuss about origin of hydrogen spectrum. Origin of hydrogen spectrum. Origin of hydrogen spectrum on the basis of Bohr's model. When electric current pass through H2 gas in discharge tube at low pressure, the H2 molecule break into hydrogen atom. The hydrogen atom absorb energy. The hydrogen atom absorb energy and their electrons jumps from low energy orbits into high energy orbit. आपने करंट पास किया H2 गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर, दिस मॉलिक्यूल डिकम्पोज इनटू एटम एंड देन H atom absorb energy from electric discharge and electron jump from low energy orbit into high energy orbit. अब वो कितनी जंप करेगा? It depends upon the amount of energy absorbed. The excitation of electron
depends upon the amount of energy absorbed. Amount of energy absorbed. जितनी एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा उतना इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट पे जंप करेगा. लो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, यू गॉट फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट. आप इसको ज्यादा एनर्जी का वो अब्सॉर्ब कर ले, इट जंप फ्रॉम सेकंड टू थर्ड एंड देन मोर एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन. So we say the excitation of electron depends upon the amount of energy absorbed by electron. Absorbed by electron. These excited electrons are unstable and come back into low energy orbits and emits energy. तो ये हमारे पास था ऑरिजिन ऑफ एच स्पेक्ट्रम. मैं इसको अगर शॉर्ट से रिपीट कर दूं, आपने H2 गैस को फिल किया डिस्चार्ज ट्यूब में एट लो प्रेशर. तो आफ्टर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, दिस मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू H atom. That atom absorb energy by electric discharge and jump from low orbit into high orbit. और जब वो वापस आएगा एनर्जी को emit करेगा. And now we say, if we draw the energy diagram, if we draw energy level diagram, this is the lowest energy level N1, then second energy level, high energy level N1, then second shell N2, then third shell of high energy N3, then fourth, fifth, sixth, and seventh with different energy levels 3, 4, 5, 6, and 7. Now, when electron jump from high orbit to first orbit, second to first, third to first, fourth orbit to first orbit, fifth to 1, 6 to 1, 7 to 1 or so. Here N1 equals to 1, electron jump into first orbit from the high orbit 2, 3, 4, so on. That is called ultraviolet radiation. That was studied by Lyman and named as Lyman series. That is called Lyman series. All these radiation will fall in UV region. When electron jump from third shell to second shell, fourth shell to second shell, fifth shell into second shell, that electron de-excited comes back into the low energy orbit. Here electron jumping into second orbit from the high orbit 3, 4, 5, so on infinity. That was studied by Balmer and named as Balmer series. That radiation will fall in visible region. Similarly, when electron jump from high orbit to third orbit, it will emit energy. Here, electron jumping into third shell from the energy levels 4, 5, 6 and so on. That was fall in infrared named as Paschen series. Similarly, when electron jump from high orbit to fourth orbit, here N1 equals to 4, N2 equals to 5, 6, 7 and so on. That is again IR region named as bracket series. Similarly, in Puffin series, electron jump into fifth orbit from high orbit. ये वजह हमारे पास था origin of Harger spectrum.